I invite Chief Editor Remarkings, Professor Nibir K. Ghosh, to the dais. I invite Professor A. Karunaker, Editor Remarking, to the dais. I invite our guest of honors, Shri Devashish Chakravarti, Dr. Anil Raju, Professor Abdul Shravan, Professor Shangar, and everybody present here. Welcome, very well welcome to all of you. Now I invite dignitaries to the dais to light the lamp of learning and creativity, and invoke the blessings of supreme and divine powers. चिंता कुल इस वक्त में बना प्रीत का छंद, लिए किलकता काल की दीप जले निर्द्वंद. Thank you so much, Professor Sugata Bose. Thank you so much, all the guests. Now I invite Dr. Shobhi Mathur, former head Department of English, Agra College, Agra, to present each one. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. Dr. Shobhi Mathur. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है. हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है. पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है. बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना. हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. दूर अज्ञान के हैं अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे. दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे. बैर होना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। थैंक यू सो मच मैम। ये थी आगरा की सुरीली आवाज़ डॉक्टर शोभी माथुर। अतिथि देवो भव, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा। नाउ आई रिक्वेस्ट Mr. Nibir Ghosh, Secretary, Agra Club, Agra, to present the floral greetings to our chief guest, Professor Sugata Bose. I request Dr. Vivek Bhatnagar to present token of welcome to eminent physician Dr. Anil Raju. I request Mr. Amit Roy to present flowers to Professor Abdul Shaban, Deputy Director, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Thank you, Mr. Amit Roy. I request Dr. Vinod to present flowers to Professor Shankar Dutt, Chairman, Bihar Sangeet Natak Academy, Patna. Dr. Vinod. I request Dr. Saurabh to present bouquet to Shri Devashish Chakravarti, Outstanding National Scientist and Director, ADRDE. Saurabh. Dr. Saurabh. Thank you, Dr. Saurabh. I request Mr. Sandeep Arora to present flowers to Dr. Sugam Anand. I request Nivedita, Dr. Nivedita, to present token of love to Dr. M.C. Gupta.
I request Dr. Modita to present bouquet to Swami Sujayanand. Dr. Modita. I request Advocate Naren Singh to present flowers to Group Captain Japal Singh Chauhan. I request Dr. Chandrasekhar to present flowers to Mr. Onkar Sane. Dr. Chandrasekhar. I request Dr. Priyam Ankit to present flowers to Dr. Devvraj Sharma. Dr. Devvrat is very humble. I request Dr. Sunita Gupta to present flowers, our very young contributor to this special issue, Tara. I welcome Chairperson, Honorable Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar University, Dr. Arvind Dixit. Welcome to the dais, sir. I solicit your presence on the dais, sir. I request Dr. Shailin to present a token of love and welcome to our Honorable Vice Chancellor, Dr. Arvind Dixit. I request Dr. Rita Nigam to present flower to Dr. Sadra Samarin. Ma'am, please. वो तो दे दिया. I request Dr. Shifali to present bouquet to Dr. Sujata, Principal BDJN College, Agra. I request Mrs. Sumita Roy to present token of love to Mr. Brij Khandelwal. Mr. Brij Khandelwal. He's there, yeah, at the back. Again, to Mr. Subir Ghosh to present flowers to Dr. R.S. Tiwari, Sachiv Narakas.
very warm welcome to each one present here. Now I invite Chief Editor Remarkings, Professor Nibir K. Ghosh, Emeritus Professor, Senior Fulbright Fellow at the University of Seattle, USA, Session 2003-4, and internationally acclaimed scholar, writer, and critic for welcome address and his opening remarks. Professor Ghosh. Good morning, friends. Our most esteemed chief guest, Professor Sugata Bose, our revolutionary Vice Chancellor, Dr. Arvind Dixit, Dr. Shankar Dutt, Dr. Shaban, Dr. Anil Rajan, Mr. Chakravarti, Professor Sugamanand. I'm really at a loss for words because I could go on endlessly naming the personalities who are here present to make this such a proud moment for remarkings. It is a matter, if one addresses the solar system, you have around 9 planets. But what do you do when you have the manifold solar system present under one roof? My greetings to one and all, and I have absolutely no words to thank each one of you who is present here, especially all those contributors, friends, lovers of remarkings, lovers of Bose, who have come from different parts of the country, which is a very rare achievement for us, because I wish to tell you that this is not merely an event where a launch of one journal is concerned. The most important thing is, why a special number on Subhash Chandra Bose? It is amazing indeed that in recent times we have the acknowledgements from Lord Mountbatten, from Clement Attlee, from Dr. B.R. Ambedkar's testimony. The whole country recognizes the contribution that Subhash Chandra Bose has made towards India's freedom. You may have noticed that today we have not garlanded any portrait. This is not a slip. This is a kind of a determined effort that we have made to make sure that by garlanding portraits and observing rituals, we serve absolutely no purpose. When the whole world has begun to acknowledge the contribution of Subhash Chandra Bose, you will be surprised to know that even day before yesterday, I received a mail from a professor at California who was aware I sent him an invitation for this launch. He'll be coming to Agra in the first week of April also. And he said that I'm really amazed at the greatness of this leader. But how come not people are allowed to be aware of it? The answer lies in the quote that we have used here by Chinua Achebe. Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter.
the story of bringing together 31 contributors from different parts of the world and from different parts of the country into this collection. This is the story I wish to share with you. When we floated this idea, I talked to my friends, and the process which started on 23rd January 2016 on Netaji's 119th birth anniversary. It was a year-long process, and what was very important is the passion that I've seen in all the contributors. They would ring me up almost every week and say, oh, you know, I was about to complete my paper, we have just discovered there is another book by so-and-so gentleman and all that. And the same Californian friend tells me that the Hollywood made an Oscar-winning film on Gandhi. I'm surprised that there is no effort on Hollywood's part to make a film on this legendary hero who changed the course of history by creating the INA in a foreign land. So primarily our effort has been what is there in the spatial number. When you get to read it, when you get to go through the flyers that we have distributed, where we have taken excerpts from most of the writers who have contributed, you will realize that we are not trying to restore the glory of Subhash Chandra Bose. We don't need to restore a glory of a leader of his stature. We refused to garland his portrait because we don't consider his ideas dead. We consider them alive to be taken up each and every moment of our existence. And what is most important is, with the declassification of files, one of the most important questions that are being raised, क्या सुभाष बोस की मौत हुई थी? वो गुमनामी बाबा कौन थे? ये फाइल्स क्या कह रहे हैं? किसने उनके नाम को यहाँ नहीं पॉपुलर होने दिया? तो दोस्तों, आज मेरा ये संकल्प है जिसमें मैं आप सब लोगों का साथ चाहता हूं कि उनकी डेथ उस दिन हुई या नहीं हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनके किसी भी आदर्श को हम अपने आप में देखने की कोशिश कर सकते हैं क्या? The spotlight is not on Subhash Chandra Bose. It is on us who we should ask ourselves, do we deserve the legacy? And in this great effort, all of you who are present here, मैं आप सब लोगों को आज ये शेयर करना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी दोस्तों से इस बारे में बात भी किया है कि हमारी कहानी शुरू होती है इस लॉन्च से, ख़त्म नहीं होती है। और हम ये कोशिश करेंगे कि जितने हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, ग्रुप कैप्टन चौहान इज हियर, आई टॉक टू प्रोफेसर शंकर दत्त, प्रोफेसर शबन, कि हम जिस जगह में हैं, क्या हम 10 लोगों को के बीच में बैठकर अपने घर में बुलाकर एक कप चाय पर उनसे बोस पर चर्चा कर सकते हैं? अगर हम ये करते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर 10 इंसान भी अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहा है, तभी देश बदलेगा। होर्डिंग्स और स्लोगन से देश नहीं बदलता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रोफेसर घोष। और जब गार्लैंडिंग की बात हो रही थी तो मुझे सुभाष चंद्र बोस की पंक्तियाँ याद आ रही थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग फूलों को देखकर मचलते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा कांटे लगते हैं, इसलिए सहज रहिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर घोष। Now I invite Professor Sugam Anand to address this August gathering. Professor Sugam Anand, D.Lit, is professor in the Department of History and Culture, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra.
He is also chairman, Ambedkar Chair in the university. He has also been Pro-Vice Chancellor and Acting Vice Chancellor of Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. Very warm welcome to Professor Sugamana. मुख्य अतिथि प्रोफेसर बोस, अध्यक्षता कर रहे कुलपति जी माननीय श्री अरविंद दीक्षित जी, मंचासीन डॉक्टर घोष, डॉक्टर सुनीता रानी घोष, डॉक्टर करुणाकर, यहाँ उपस्थित विद्वज्जन, मुझे मालूम नहीं था कि आज मुझे यहाँ बोलना है, लेकिन ये परिकल्पना जो डॉक्टर एन के घोष ने कभी प्रतिपादित की थी बहुत पहले कि रिमार्किंग्स का एक स्पेशल नंबर सुभाष चंद्र बोस जी पर लाया जाए, उसका उद्देश्य संभवतः उनके मन में इस बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर करना था और शायद इतिहास में छुपे हुए कुछ रहस्यों को नए परिप्रेक्ष्यों में विश्लेषित करना था। सुभाष चंद्र बोस ये नाम आते ही शायद सबके मन में एक ऐसे देशभक्त की कल्पना उपजती है जिसने अपना सर्वस्व इस देश पर न्यौछावर किया, जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या कठिनाई आएंगी, जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि क्या कांटे उसके मार्ग में बिखरेंगे, उन पर सहज चलता हुआ उसने अपना सर्वस्व होम कर दिया। इतिहास महान लोगों को तरह तरह से विश्लेषित करता है। शायद इतिहास लिखने वाले अपनी तत्कालीन सामाजिक, जिस समय वो लिख रहे हैं उस समय की आवश्यकताओं के अनुरूप इतिहास लिखते हों, शायद कुछ राजनीतिक मजबूरियां हों। बहुत सारे इतिहास में ऐसे नक्षत्र हैं जिनको शायद वो महत्व इतिहास लेखन में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। शायद सुभाष चंद्र बोस उनमें से एक हों। उनके जीवन की संपूर्ण धारा देखिए। बचपन में उनके द्वारा किए गए प्रश्न, एक मेधावी विद्यार्थी होने के बावजूद कुछ कर गुजरने की तमन्ना इस देश के लिए। अगर आप जब वो जेल में थे उस समय भेजे गए उनके पत्रों से आप पाएंगे कि एक एंग्स्ट है, एक व्याकुलता है उस व्यक्ति के मन में कि वो इस देश के लिए क्या करे। जिन लोगों ने उनको तरह तरह से अवधारणाओं में ढालने की कोशिश की है, वो शायद उस व्याकुलता को समझ नहीं पाए। वो देश को स्वतंत्र चाहते थे और स्वतंत्रता के उपरांत ये देश कैसा विकसित हो, ये परिकल्पना उन्होंने दे दी थी। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि उन्होंने कभी हिटलर और मुसोलिनी का साथ लिया तो शायद उनकी विचारधारा से वो प्रभावित थे, ऐसा नहीं है। एक देशभक्त अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पहले अपने सामने रखता है और बोस एक अध्यात्मवादी व्यक्ति थे, विवेकानंद से प्रभावित थे, स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे। उनके विषय में ऐसा सोचना शायद उचित न हो। सत्ता के संरक्षण में जो लोग इतिहास लिखते हैं वो शायद उनकी कोई मजबूरी रही हो कि उन्होंने वो महत्व सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया। लेकिन क्या वो जन जन के मानस से ऐसे विरल व्यक्तित्व को विस्मृत कर सकते हैं? संभव नहीं था। ये गाथा जो त्याग और कल्याण की, लोक कल्याण की लिखी गई, वो अमर रहेगी। बोस आज हम सबके दिलों में जिंदा है। इसलिए जब डॉक्टर घोष ने ये प्रयास किया तो मैं समझता हूं सहज 31 लेख उनको आसानी से मिल गए होंगे।
एक समाजशास्त्री अलग तरह से सुभाष चंद्र बोस को मूल्यांकित करेगा, एक इतिहासकार अलग तरह से करेगा, लेकिन एक आम जन के लिए अगर बोस प्रेरणादायी हैं तो वो इसलिए हैं कि उन्होंने, चाहे वो राजनीति में रहे, चाहे उन्होंने राजनीति छोड़ दी, चाहे उन्होंने आईएनए का गठन कर सशस्त्र रूप से भारत को स्वतंत्र कराने की चेष्टा की, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनका जो विजन, उनकी जो परिकल्पना स्वतंत्र भारत के बाद की थी, वो परिकल्पना सार्थक हुई कि नहीं हुई। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शायद भारत का विभाजन नहीं हुआ होता अगर बोस सक्रिय रहते 1947 में। वो कहते हैं कि उनका निजी इक्वेशन मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत अच्छा था। उनकी परिकल्पना में कभी टू नेशन थ्योरी की बात नहीं थी। जो भी हो, आखिर उनकी विरासत को आगे चलाने वाले इस देश के युवा हैं और हर पीढ़ी के हर युवा के लिए, देश के हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बोस प्रेरणादायी रहेंगे। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मैं मानता हूं कि विराट व्यक्तित्वों की इतिहास में जगह है, लेकिन उन विराट व्यक्तित्वों का महत्व तभी है जब उनकी पहुंच इंटेलेक्चुअल सर्कल से हटकर आम आदमी तक हो। मैं वर्तमान सरकार की इसीलिए प्रशंसा कि बहुत कुछ बोस के विषय में जो प्रच्छन्न था, छुपा हुआ था, उसको सामने लाने में उन्होंने बहुत योगदान दिया। एक जिसको रिकिंडलिंग ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, वह आम जन में बोस के प्रति पैदा हुआ और ये इंटरेस्ट अखिल भारतीय है। तमिलनाडु में गया, वहाँ पर मुझे उनके प्रशंसक मिले। मैं बिहार गया, बंगाल में तो है ही, गुजरात गया, वहाँ उनके प्रशंसक मिले। बहुत सारे लोग जिनकी पीढ़ियाँ जिनके पूर्वज कभी इंडियन नेशनल आर्मी में सदस्य रहे थे, वो आज भी फॉन्डली, बहुत स्नेह से उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं। मैं बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर NK घोष को कि उन्होंने ये सोचा कि रिमार्केबल्स की एक पूरा अंक एक महान व्यक्तित्व को, सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुगमानंद। Now I invite eminent physician of Agra, Dr. Anil Rajan, known all over for the magic of his healing touch. Dr. Anil Rajan. Good day, everybody. It's a great privilege to be among all luminaries who are present here. I am really delighted to be here this morning to enjoy this wonderful confluence of remarkings and Netaji Subhash Chandra Bose. At the very outset, I extend my heartiest felicitation to Team Remarkings led by Professor Ghosh for reaching the 16th year milestone with this special number. It is creditable indeed that an English journal published from the Hindi heartland, it has reached such a valuable space for itself on the international literary map in a relatively short span. As an extremely busy physician, I may not have read many pieces of remarkings, but the one which I managed to go through, it has really convinced me of its commitment to issues and concerns to the central contemporary human thoughts. This special number on Netaji on his 120th birth anniversary couldn't have been more appropriately timed. The declassification of files by the government, it has brought a great revival of interest in Netaji. It is noteworthy that this exemplary collection of essays has highlighted every possible dimension of Bose's life and work. In my opinion, the most important legacy that Subhash Bose has left behind is his extraordinary sense of belonging to the motherland. He leads from the front.
what we see missing today is that patriotic fervor which Bose had. And with that, he could challenge the most mighty empires in the world by commanding the attention of both his friends and foes. For the youth of the country, few are groping in the dark. And there cannot be a better role model than Bose. He is the person who can inspire every youth in the country. There may be enough evidence all around of India rising, India rising. We see every day, we read every day, we hear every day. But what seems to be deficient is the total indifference to the notion and value of true patriotism that we need to learn from Netaji. I am optimistic that this remarkable effort by remarkings will open further avenues for showcasing the contributions made by Bose in a spirit of total surrender to his motherland. I assure Professor Sugata Bose, Professor Ghosh, and all the dignitaries present here my fullest cooperation in keeping alive the vision and mission of the Immortal Legion of India's freedom. Thank you. Thank you so much, Dr. Anil Rajan. डॉक्टर अनिल राजन को जब हमने यहाँ इनवाइट किया तो वो कह रहे थे कि मुझे कुछ काम बता दीजिएगा, पर मैं लाइमलाइट में आने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। और तब हमने उन्हें रीज़न बताया कि हम उन्हें यहाँ क्यों आमंत्रित करना चाहते हैं। और कारण यह था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ आज़ादी का बिगुल बजाने के लिए भारत छोड़ा था, तो उन्हें एक पेडिट्रिशियन ने, एक बाल रोग विशेषज्ञ ने, जो उस समय के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बाल रोग विशेषज्ञ थे, डॉक्टर शिशिर कुमार बोस, जो हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर सुगाता बोस जी के आदरणीय पिताजी थे, उन्होंने ही वो कार ड्राइव की थी जिसमें बैठकर नेताजी सीमा से पार गए थे, सीमा पर छोड़ा था उन्हें। थैंक यू डॉक्टर अनिल राजन। नाउ आई इनवाइट an eminent personality from theatre, a professor of English at Patna University, Patna, and a very dedicated ambassador to remarkings, Professor Shankar Dutt. Professor Sugata Bose, the Vice-Chancellor of Agra University, Dr. Arvind Kumar Dixit, Professor Nibir Ghosh and his wonderful scholarly wife, Dr. Sunita Rani Ghosh, Professor Karunaker, Professor Abdul Shaban, eminent scholars present in this auditorium, and friends. History has many cunning passages, contrived corridors, and issues, deceives with whispering ambitions, guides us by vanities. Perhaps these lines of T.S. Eliot describes how history has treated Subhash Chandra Bose. Let me outline a few important points about Bose, and I wish to do it because it is important that we locate Bose's ideas in the very difficult times that we live in.
The first thing is Bose's unflinching opposition to British imperialism. And what he mentions on several occasions, particularly in the well-known Kabul thesis of the reconstruction, a national reconstruction of India in terms of a socialist egalitarianism. The success of a unified anti-colonial national movement depended largely on defeating the divisive policies of British imperialism. Very sadly, today, one of the major challenges faced in this country is associated with the whole issue of the communal divide. And Bose wanted very clearly and very generously, unlike Nehru in his presidentship earlier, when he refused to negotiate at all with Jinnah, and he had valid reasons for doing that, there is no doubt about it, Bose too felt that the Muslim League was not the sole authoritative representation of the Muslims in the subcontinent. But Bose had great generosity of spirit, which meant that he wished to create a certain kind of a space for negotiation. And he was not a narrow parochialist at all, and he believed in the whole notion of live and let live. He followed it up in terms of actual practice. In the Indian National Army, for instance, he writes that there were many more Muslim personnel than Hindus, but they worked together toward a common goal. The important thing is that possibly the partition of India, which was completely related to this divisive British policy, could not be defeated fully because of a lot of internecine issues that came up within the Congress itself at that point in time. We do not know what would have happened if Bose had actually lived. Whether or not the subcontinent would have been partitioned or not is now merely a subject of speculation. Let us look at some of the other things that Bose stood for. He stood for justice for the untouchables. Again, a vexed issue that has confronted this country in terms of the language problems. He believed that Hindustani in the Roman script would possibly be the best answer for public communication in the country. Let us look at how all these come together in the practices of the Indian National Army, particularly in 1946. In 1946, when Gandhi was at Noakhali, trying to douse the fires of communal distress, who were the people who had gone there even before Gandhi did? It was Niranjan Singh Gill and Jeevan Singh who provided the assistance to Gandhi in terms of providing not only relief and rehabilitation, taking the victim to various relief camps, and they were erstwhile members of the Indian National Army. The same thing in Noakhali. Obviously, the Hindus were worst hit, and in Bihar correspondingly, where the Muslims were largely the victims, there was General Shah Nawaz, who also provided the same kind of relief. And
this clearly shows that Bose's army could have been or was envisaged to be the microcosm of an India that might have been. Bose, again, was someone who was unusual for his times because he saw very early the whole issue of population being a burgeoning problem of this country. And he sought control of population. We are looking at the 30s, so far ago, when really the population of India was probably 1/4 of what it is today. But probably Bose realized, as many of us do today, that if population is not controlled, then the demographic dividend that we speak of as a strength can easily turn into a demographic catastrophe. What did Bose have in mind for India? He believed in modern industrialization along with revival of the cottage industries, but it would be directed by the state. He believed in a socialist reconstruction of the country. So when you have certain historians, largely belonging to the Western world, who are critical of Bose as being an ally of the fascists, it does not stand to reason at all. Alex von Tunzelmann is one such critic who thinks of Bose as being merely a fascist. He was not a fascist at all. He believed in India, which was absolutely foremost in his mind. And if one were to look at all the letters that have been released, his letters to his wife, one would recognize that in those very personal correspondences, to him, India came first. Inner party democracy, another very interesting issue. He believed in inner party democracy, that the leaders ought to be elected from below than being thrust from above. This obviously was associated with everything that Bose had to undergo within the context of the Haripura and the Tripuri Congress meets. At that point of time, Gandhi could select that entire Congress working committee. And today we realize all the national parties, they have scant respect for the elections to the legislative assemblies mainly, and leaders are usually thrust from above, rendering Indian democracy more as an electoral democracy than a participative democracy. This is what Bose actually had in mind. Finally, before I conclude, I would like to make a very fervent appeal. Today, which is a very significant day, Dr. Nibir Ghosh has enabled this day to happen, and he's been doing wonderful work over so many years to promote scholarship, research, which is truly remarkable. And Agra, I think, and the rest of the academic community in India should be actually proud of the work that he's doing. I would like to make a very special appeal and a request. There are many netas that have arrived in India, big netas, small netas, medium-sized netas, and Netaji Subhash Bose is associated with the prefix Netaji, probably the only genuine Neta that we have in history. I think the appeal I would like to make is that henceforth he is not given this appellation of Netaji, but as Rabindranath Tagore called him, Deshnayak,
Desh Nayak Subhash Chandra Bose. My fervent appeal. Thank you very much for your patience. Thank you so much, Professor Shankar. देश नायक सुभाष चंद्र बोस, जिनके लिए आज से हम ये संबोधन कम से कम मैंने अभी से शुरू कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभागार में हर एक शख्स ने उसे बिल्कुल अपने दिल में उतार लिया है. एंड ही इज़ फॉर्मर डायरेक्टर एंड चेयरपर्सन ऑफ बिहार संगीत एंड नाटक अकेडमी. वेरी थैंक्स अ लॉट सर. Now I invite Professor Devashish Chakravarti, who is an eminent scientist and director ADRD. He had the opportunity not only under the leadership of late former President Dr. Abdul Kalam, but also to head leading. Our chief guest today, Professor Sugata Bose, the DNA of our great leader, Subhash Chandra Bose, is here with us today. And the dignitaries on the dais, off the dais, scholarly luminaries, and Nibir K, who has given me this opportunity to stand before you on a day when we mark Subhash Chandra Bose after 120 years almost since his birth. I, being a worker in this independent India, working for an organization of defense research and development, working on the research of parachutes where soldiers jump from a height of 28,000 feet in a free fall first, and then the parachute opens and he comes down in the land. Why I'm saying so? Because today I received a small WhatsApp message from my wife who said, minds are like parachutes. They function when they are open. We all open our mind today to mark Subhash Chandra Bose, not to make the ritual which has been already told by Dr. Nibir K some time back, but let's have a 5-year plan first to inculcate what all he has dreamt for the country. And that will be the biggest tribute to this legendary leader, Subhash Chandra Bose, as well as the country. I'm sure, you see, as Rabindranath Tagore says, mind is without fear and head is held high, which Subhash Chandra Bose in literal terms taught us. Today in this dais, when I'm speaking with you all, I am reminded of my very childhood days when my father used to give me a small olive green dress of Netaji Subhash Chandra Bose. And I used to feel so much excited those days. Why we are not getting excited today? Why this thing is getting faded out? I feel it's all our duty to the nation to give this tribute to Subhash Bose. And it's appropriately done today with a remarking edition of Dr. Nibir K with an initiative. And I'm sure this will go a long way to take our minds, to shape our minds, irrespective of caste, creed, religion, getting over of all these things and serve the nation with all your might, all our might. And that will be the best tribute to our leader and the nation.
There is no emotion other than the motherland. If you all have emotions, it is for the motherland. When I design a torpedo, it is for the motherland. When a tea seller sells his tea, it's for the motherland. It's on the economic freedom, social freedom, and at the most, freedom of all mind. Mind should be absolutely free, objective, and take the lessons of Netaji. And I'm sure we are not going to discuss whether he is dead or alive. We are going to discuss something we have to do for the country. Go ahead, forge ahead, and see that our nation is on the top of the world. With this message, I conclude. I don't have the stories. Thank you. Namaste. Thank you so much, Dr. Devashish. देश नायक सुभाष चंद्र बोस का नाम ही ऐसा है कि जब हम इस कार्यक्रम के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे तो अधिकतर लोगों ने सुनकर ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस नाम ही ऐसा है कि सुनकर एक्साइटमेंट हो जाता है, रोमांच हो जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवाशीष. Now I invite Professor Asim Siddiqui. He is Professor of English at Aligarh Muslim University. Professor Asim Siddiqui. Professor Sugata Bose, Honorable Vice Chancellor, my friend Dr. Nibir K, and dear friends. First of all, I must thank my friend Nibir ji for giving me this chance to stand here and also inviting me to contribute one write-up on Subhash Chandra Bose. Believe me, when I took up this task, I did not know that I am going to discover a hero for my lifetime. So here I was actually, when we were at school, we studied certain things about Subhash Chandra Bose in those lessons that he formed INA, Azad Hind Fauj, and then say Subhash Chandra Bose sided with say British Empire's enemy. So in fact, I mean, those were the things. But when actually I started reading Subhash Chandra Bose, I discovered that there is something in him that probably makes him a complete person, a complete politician. And why I say this? Because if we talk about the contemporary relevance of Subhash Chandra Bose, then possibly there is everything in Subhash Chandra Bose which cannot be appropriated by some recent discourses. Here was a man whose stance was extremely clear on communal question. He was a person who made absolutely no discrimination on the basis of caste, color, creed. And if one has to just read the names of all those persons who were close to him in INA, when he formed Azad Hind Fauj, then possibly we cannot have a person who was, I mean, we cannot have a person like him. So here, Subhash Chandra Bose, and as far as gender question is concerned, I think he was the most enlightened person of his time. See, today we talk about gender equality. Here was a man who, say, made that Rani Jhansi regiment, and he encouraged women to fight along with men. So we don't find these instances. When we think about that discourse by the British that there are martial races, that there are some races which are meant to fight, and others possibly who don't have that kind of valor in them. But here was Subhash Chandra Bose. He enlisted people in his army who were not traditionally considered martial races. So we have somebody, in fact, who can teach something in our present times. Now I'll just say one or two more things. You see, when some reference was made to Subhash Chandra Bose, say stance on, I mean, what could have happened actually if he had been there. Partition is still a very unfinished story. And
historians may not be interested in ifs and buts, but as a scholar of, as a student of literature, I am interested in this question of ifs and buts. So what could have happened actually if Subhash Chandra Bose were around? Incidentally, say, not many people actually have read Subhash Chandra Bose, outside Bengal maybe. So I was just attending one session on one very famous book on partition. That book was titled Creating a New Medina. So after that book, after that discussion, I was just tempted to ask this question, say what could have happened if Subhash Chandra Bose had intervened in that partition question. And to my surprise, the author answered by saying that he has not read Subhash Chandra Bose. Then there was another instance, say my department, say for example the Department of History at Aligarh University is known for producing historians. But some of my friends tell me that Subhash Chandra Bose is almost a kind of forgotten hero. So that's why there was a very interesting title given by Shyam Benegal to his film Subhash Chandra Bose, The Forgotten Hero. So here I must congratulate Dr. Nibir Kumar Ghosh for say bringing out this volume. And believe me, sir, after writing this particular piece, say I'll say that my appetite to read more and more is growing. So I have come here, and I have come here a very rich person because I have read Subhash Chandra Bose. And possibly we can say that Subhash Chandra Bose stands for India's diversity like no other politician can stand. Let us salute him for that stance. Thank you. थैंक यू सो मच प्रोफेसर असीम सिद्दीकी। किताबों से बड़ा कोई धन नहीं होता, और सुभाष चंद्र बोस से जो आपने प्रेरणा ली, तो वो कहते भी थे कि अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि जो उद्धार की ताकत होती है वो बहुत घातक होती है। नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर अब्दुल शमन। He is professor at School of Development Studies and Deputy Director, Tujlapur Campus, Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. Author of Mumbai, Political Economy of Crime and Space, which was published in 2010. With the wide experience of international travel, he remains engaged in using education and skill development strategies to transform lives. A very warm welcome to Professor Abdul Shaban. Professor Sugata Bose, Professor Arvind Dixit, Professor Nibir Ghosh, Professor Sunita Rani, Professor Karunaker and Professor Dutt, and dear colleagues, friends, very good noon. It's really a pleasure to be here and talk on such an issue which is very close to our heart. Ultimately, इस मुल्क में रहने वाले कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी सोचते हैं कि जो इसकी सिविलाइजेशन है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है और कैसे कैसे लोगों को पैदा किया है। और कुछ सितारों में जो हमारी तारीख़ है वो बताती है कि कुछ सितारों में एक सितारा वो भी था जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था, जिसको हम अब देश नायक कहते हैं। दो इम्पॉर्टेंट लीडर इस देश ने पैदा किए। उनके मेथड अलग थे लेकिन पर्पज़ एक था, और बदकिस्मती हमारी ये रही कि उन दोनों लीडरों को हमने 2 साल के अंदर, within 3 years almost, we lost both of them. और वो दोनों थे देश नायक सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। बदकिस्मती इस देश की रही, और हमारे पास जो बचे वो आज उसका रिफ्लेक्शन हमारे सामने है। जो सारे लोग दबे कुचले फेस कर रहे हैं, और
बड़े बड़े लीडर हमारे सामने हैं। इसी सिलसिले में मैं चाहता हूं कि आपसे मैं कुछ गुफ्तगू करूं, कुछ बात करूं। घोष साहब ने मुझे बोला कि आप थोड़ी हिंदी में कोशिश करें ताकि हम बातों को आगे बढ़ाएं। अब प्रोफेसर सुगाता बोस यहीं पे हैं हमारे सामने, इज़ अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। ये चीज़ें ठीक है कि कुछ लोगों ने हिस्ट्री नहीं लिखी, और नहीं लिखी तो नहीं लिखी, ठीक है, ये फॉर्मल हिस्ट्री हमारी नहीं है। लेकिन मैं भी एक यूपी के विलेज से आता हूँ, गांव से आता हूँ, फार्मर की फैमिली हमारी है। लेकिन जो हमारी कहानियाँ हैं, जो ओरल हिस्ट्री है, जो हमें जनरेशन से दी गई हैं सर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और उनमें नाम जो है गांधी और बोस का नाम सबसे ऊपर आता है, और लोग अभी भी वो सेलिब्रेट करते हैं। उनके आदर सम्मान में कहीं कमी नहीं हुई है, और उस हिस्ट्री को लेके मैं चलता हूँ। और उसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा, जब प्रोफेसर निबिर घोष ने मुझे ये कहा कि एक वॉल्यूम हम बनाएंगे, तो आई वॉज सो एक्साइटेड। ये नहीं कि मेरी पूरी फैमिली इसमें कंट्रीब्यूशन में लगी हुई थी। हाँ, आई हैव ए सन, ए स्मॉल सन, 12 years old, he was also writing that he will write. So this is where, and that is where we have to bring this talk to our dining table, family or living room. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन बातों को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम कुछ अच्छी बातें जो छूट जाएंगी और बुरी बातें हमारे साथ आगे बढ़ती रहेंगी। तो उन लीडर्स को हमें याद करना पड़ेगा, उन लोगों को हमें याद करना पड़ेगा जो हमको एक रख सकते थे, और ऐसे लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे जो हमको एक रख सकें, जो हमको डिवाइड ना करें, जो इस मुल्क के सलामियत को और इनके लोगों को, उनको वो मर्तबा, वो दर्जा दे सकें जो इसके लोग उसको डिज़र्व करते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी सिलसिले में बात करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हिस्ट्री से ओझल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग अभी भी लिखते रहते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक MI6 की एजेंट है, जिनकी एक हिस्ट्री है, कई उस कंट्रीब्यूशंस आए हैं उसमें, और उसका नाम है नोरा हैरिस। और नोरा हैरिस जो है MI6 का सीक्रेट एजेंट है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कई लेटर्स उन्होंने लिखे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया जा रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं वहाँ से बात करूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो हमारा मुस्तकबिल या भविष्य, हमारा फ्यूचर क्या ऐसा होता या कुछ और हुआ करता, या सब कॉन्टिनेंट का फ्यूचर ही अलग होता। तो इस चीज़ों पे मैं कयास करने की कोशिश करूँगा, इसमें कुछ गेस करने की कोशिश करूँगा कि क्या हो सकता था कि अगर जिंदा होते सुभाष चंद्र बोस। और पार्टिकुलरली नोरा हैरिस जो टीपू सुल्तान की फैमिली से कनेक्टेड थी, और नोरा हैरिस जो थी ग्रैंड डॉटर ऑफ इनायतुल्लाह खान, बैरिस्टर इनायतुल्लाह खान की ग्रैंड डॉटर थी, और MI6 में थी, क्योंकि MI6 बहुत इजी एक्सेस था पूरे लीडर्स को, वो इजीली एक्सेस करती थी, और बहुत सारी स्टोरीज़ उन्होंने उससे कनेक्ट किया। और वो लिखती हैं कि जब जिन्ना ये चाहते थे कि ये मुल्क जो है डिवाइड हो जाए, और वो ये चाहते थे कि जो MI6 है, क्योंकि सीक्रेट सर्विस अगर कन्विंस हो गया तो देश तो इजीली डिवाइड हो जाता है। कहीं भी अगर पुलिस फोर्स और सीक्रेट सर्विस आपकी कन्विंस्ड है तो वो क्रिएट कर देंगे नया। और वो कोशिश कर रहे थे, और कुछ कोट करने की कोशिश मैं करूँगा वहाँ से। और उसमें ये था कि जब जिन्ना मिलते हैं नोरा से, तो he tried to convince Nora, but Nora is another kind of person who she is not convinced, because she is convinced in the ideology of सुभाष चंद्र बोस। तो वो कोशिश करती हैं कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस को इन्फॉर्म रखा जाए कि ये मुल्क किस तरह से तकसीम हो सकता है या बढ़ सकता है, और इसमें जो कम्युनलिस्ट हैं, जो जिन्ना जैसे लोग हैं, या दूसरे जो हिंदू महासभा, या जो ऐसे सिचुएशन थी उस वक्त, वो लोग मिल करके किस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो पूरी स्टोरी है, और आई ट्राई टू पुट इट
in this remarking addition, that story. And जिन्ना उस वक्त भी लिखते थे कि मुसलमानों को बहुत ख़तरा है, 20% लोग जो है वो गुलाम बन के रह जाएंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी के, और उसी तरह से वो फियर पैदा करते थे, और उसी को वो लिखते रहते थे। और उसी सिलसिले में उन्होंने जो, और फिर उसके बाद नोरा लिखती हैं कि किस तरह से चर्चिल, पूरी कैबिनेट, ब्रिटिश कैबिनेट, और किस तरह से जिन्ना और दूसरे लोगों में ये चीज़ें बात आती रही और कन्विंस होते रहे, किस तरह से कांग्रेस कन्विंस होता रहा कि डिवीज़न जो इस मुल्क का किया जाए। और उसी सिलसिले में उन्होंने लिखा है, नोरा ने फर्दर ही रोट, क्योंकि उस वक्त लीडरशिप का क्वेश्चन था, तो आई एम कोटिंग फ्रॉम हर दैट नोरा फर्दर रोट टू बोस दैट इन दिस आवर ऑफ पेरिल द कांग्रेस लीडरशिप इज इनकेपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप टू जिन्ना's bullying and British intrigue. Only you can save the country of my ancestors from a bloodbath that is sure to take place should the British design succeed. So what she was writing, that अगर आप नहीं रहेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, और यही वो बात करते रहे, नोरा उसी बात को करती रही। और अगेन जो सिचुएशन उस वक्त था, जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो सकम कर रही थी, इवन महात्मा गांधी भी सकम कर गए उसको। लेकिन शी अगेन राइट्स that the Congress as a body was forced by its complete dependence on the British Indian administration and military to accept partition as the only alternative to the prevailing anarchical conditions. Had Subhas been around in India in 1946-47, the INA and the nucleus of Azad Hind Provisional Administration with other nationalist credentials unsullied by sectarianism or communalism would have been available in the grave emergency for restoring peace to India. So this is what actually they used to expect from him and used to write. And very quickly I will come to what Anita Bose wrote on this, particularly on the partition and the multicultural fabric of the country, how it would have been saved by Desh Nayak Subhash Chandra Bose. She wrote that, and she made a very remarkable, I say remark. What she wrote, that his being a Bengali who lived in a state which was predominantly Muslim would have helped, as his ideas were different. There certainly was more trust and acceptance of Netaji on part of the Muslim than other top leaders of the Congress at the time. Most other leaders at the time hailed from places where one religion was dominant. So I say that is where Netaji's ideas were different, and my friend earlier who spoke before me, he was talking about it. And with this I will end that, but destiny had other plan. Subhash Chandra Bose could not return to India to save it from partition. Millions expected the miracle to happen, which could not. Subhash Chandra Bose was capable and had all the potential of changing the destiny of the subcontinent and take the humanity and this region to different direction and brighter common future, which actually could not happen. So thank you very much for this. थैंक यू सो मच प्रोफेसर शबन, शुक्रिया। और जैसा कि आपने बताया, एक इतिहास लिखा जाता है और एक इतिहास लोगों की ज़ुबानी बहता है समय के साथ साथ, और वो इतिहास ज़्यादा विश्वसनीय होता है। और यही वजह है कि आज भी हम देश नायक सुभाष और महात्मा गांधी के आदर्शों को भूले नहीं हैं। और देश नायक सुभाष ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता पुकारा था। और यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जब प्रोफेसर शबन बात कर रहे थे कि हमें जो
पुराने जो सचमुच नेता हुए हैं उन्हें याद करना चाहिए। और क्योंकि आज के जो नेता हैं वो उन आदर्शों से कहीं विचलित हो रहे हैं, तो जब ये जो अभी स्पेशल इशू निकला है रिमार्किंग्स का, इसमें प्रोफेसर घोष ने प्रोफेसर सुगाता बोस का इंटरव्यू लिया है और उन्होंने उसमें उनसे एक सवाल किया था कि आपको लोकसभा में ऐसे नेताओं के बीच बैठकर जो विशेषताएं प्रोफेसर शबन ने बताई कैसा लगता है। तो उनका जवाब था कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। ये शायद अच्छे लोगों की निष्क्रियता है। चाणक्य हमें बहुत पहले सावधान कर गए थे कि सज्जनों की निष्क्रियता भी उतनी ही घातक होती है जितनी दुर्जनों की सक्रियता। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया प्रोफेसर शबन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ, प्रोफेसर शबन का जो बेटा है 13 साल का राहिल, वो बहुत अच्छा पोएट है और उसने इस विशेषांक में भी उसकी कविता है। और जब आप वो कविता पढ़ेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वो कविता एक 13 साल के बच्चे ने लिखी है। और वो केवल कवि ही नहीं है, वो स्कॉलर है। अगर वो कविता भी लिखता है तो पूरी रिसर्च करके लिखता है और उसने उस कविता को लिखने के लिए बहुत सी किताबें पढ़ी। तो अगर रिमार्किंग्स एक बच्चे को इतना मोटिवेट कर सकी इस विशेषांक को निकालकर, तो शायद उद्देश्य में हम कहीं ना कहीं सफल अवश्य हुए हैं। नाउ आई इनवाइट ग्रुप कैप्टन जयपाल सिंह चौहान, an eminent officer from Indian Air Force, to express his passionate views on Desh Nayak Subhash Chandra Bose. Group Captain Jayapal Singh Chauhan. Vande Mataram Deviyo और सज्जनों, today I am venomed with emotions as a Fauji. श्री सुगातो बोस और उपस्थित विद्वज्जन, माँ भारती के ललाट पर और विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले देश नायक सुभाष चंद्र बोस के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ ऐसा आलमतारी होने लगता है जिसका कि बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। बस आप यूं समझ लीजिए जैसे कोई किसी दरगाह या मंदिर में जाए तो इबादत के लिए सर अपने आप झुक जाता है और आंखों से बेसाफ्ता श्रद्धा के सुमन टपकने लगते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शख्सियत बहुत ऊंची थी, शायद हिमालय की बुलंदियों से भी ऊंची। एक शेर सबने सुना होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन इससे आगे का जो शेर है लोग उसे नहीं पढ़ते, नहीं जानते, जो कहता है मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यही चीज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जो शख्स हर जगह अपनी बुलंदियों पर गया, जिसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा, प्रमाणों के साथ चर्चा करूंगा, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आप को कभी शीट्स पे नहीं रखा। और जिसका एक उदाहरण मैं देता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कंधे पे कभी आपने रैंक नहीं देखी होगी। फौजियों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, उनका मनोबल ऊपर करने के लिए उन्होंने वर्दी जरूर धारण करी, लेकिन रैंक नहीं लगाई कि मैं फला सीनियर मोस्ट ऑफ द इंडियन INA, आई एम द लीडर। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कभी नहीं किया। इसी क्रम के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, इंडियन सिविल सर्विसेज
जो टॉप मोस्ट था, आज हर एक आदमी चमक चाहता है, लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस को देखें तो हर चमक से बाहर एक गुमनामी में एक सिर्फ उद्देश्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आगे बढ़े। वे एक ऐसे विजनरी थे जो सपनों को हकीकत में बदलना अच्छी तरीके से जानते थे, जो नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाए इसमें बड़े पारंगत थे। वे कुशल मिलिट्री जनरल होने के साथ कुशल प्रशासक, स्टेट्समैन, पॉलिटिशियन और सम्मोहन क्षमता के महान धनी थे। और ये सारी जितनी भी खूबियां सुभाष चंद्र बोस के अंदर थीं, अगर आप देखें हर एक के अंदर सुभाष चंद्र बोस वॉज नंबर 1, ही वॉज नेवर नंबर 2। आश्चर्य होता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हर क्षेत्र में बेस्ट हो। नौकरी करने की इच्छा हुई तो सिविल सर्विसेज बेस्ट, टॉप। पॉलिटिक्स की बात आती है तो इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंटशिप का, एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीत के दिखाया। मां भारती को आजाद करने की उस क्रांतिकारी लॉ में और घी डालने की इच्छा हुई तो छोड़ के चल दिए, और आजाद हिंद फौज, इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने के लिए। क्या ये सारी खूबियां एक व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं? मुझे लगता है कि ये शायद परमपिता परमात्मा की भारत, गुलाम भारत की जो दयनीयता थी, उसके ऊपर परमात्मा को कुछ ऐसा रहम आया कि उसने कहा कि नेताजी देश नायक सुभाष चंद्र बोस को मां भारती की गोद में दे दूं। एक ये है जो कि आगे इस लॉ को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। मुझे सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह का युद्ध प्रण याद आता है। उसमें उन्होंने कहा, देश वावर मोही एहे शुभ कर्म न ते कबहू न टरो, देश वावर मोही एहे शुभ कर्म न ते कबहू न टरो, न टरो जब जाए लड़ो अरिसो, निश्चय कर अपनी जीत करो। जीत मेरी होगी, ये चॉइस दुश्मन के पास नहीं है। दुश्मन के पास तो चॉइस है सिर्फ पराजय, वो पराजित हो सकता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इसी चीज को अपने अंदर आत्मसार किया। युद्ध का एक सिद्धांत है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉर। इन द कंडक्ट ऑफ वॉर इट इज एसेंशियल टू सेलेक्ट द करेक्ट एम। उद्देश्य बड़ा साफ होना चाहिए। और उसके बाद क्या किया जाए? डायरेक्ट ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस towards this predefined, decisive, attainable objective. किसके लिए? To break the will of the enemy. जीत हार नहीं। अगर एक बार दुश्मन का विल टूट गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो दुश्मन के पास झुकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि अंग्रेजों को उन्होंने डिसेंट सप्रेशन की टेक्निक में महारत हासिल की हुई है। अगर कोई सर उठाएगा तो हम उसमें कोड़े लगाएंगे, अपनी एट्रोसिटीज से उसको दबाएंगे, नहीं होगा जेल में डाल देंगे, और जेल में कैदियों से वो काम कराया जाएगा जो कि जानवर भी उतना काम नहीं कर सकते, यानी कि फ्री की लेबर। फ्री की लेबर उन्हें मिल रही थी। अगर ये भी इससे भी काम नहीं चला तो फांसी पे चढ़ा देंगे, हमारा क्या जाता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण कि समाज के अंदर और आग फैलेगी तो उसे सेलुलर जेल वहां भेज दो, कभी लौट के नहीं आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस
डिसेंट सप्रेशन टेक्निक को अच्छी तरीके से पहचाना और उन्होंने कहा कि जब तक कि इनको इक्वल कॉइन में इनको वापस न लौटाया जाए और ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश हुकूमत अपने आप को हेल्पलेस ना फील करने लगे, ये यहां से जाने वाले नहीं है। उसको कार्यान्वित करने के लिए दोस्तों सभी को पता है 1941 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब यहां पे आता है एक लीडर का, एक जनरल का एक विजन। उन्होंने विजन पहले से ही बना रखा था कि मैं किस तरीके से अपने इस मिशन को अंग्रेजों की कमर तोड़ कार्यान्वित करूंगा। सिर्फ नेताजी जो थे असही समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा अब काम नहीं चलने वाला है, वहां से चले। लेकिन चलना तो आसान था, अपनी आजाद हिंद फौज और इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिवाइव करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें कितनी मुश्किलें थीं। चारों तरफ अंग्रेजों के दोस्त थे, कहीं से भी सीक्रेसी लीक हो जाए। टेरेन्स कितने डिफिकल्ट थे और जो भी नेताजी के बारे में बताता उनके प्लान के बारे में, उसको अंग्रेज अच्छी तरीके से उसको पुरस्कार देते। लेकिन नेताजी ना सिर्फ इन सब चीजों से, कितनी बड़ी प्लानिंग रही होगी, कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट। जो जाके वो हिटलर वगैरह से मिले थे तो ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन के अंदर ही जाके सीधे गए उनके दरवाजे पर खटखटाया। कितनी पहले से उस योजना को ऑलरेडी क्रियान्वित कर चुके होंगे जो कि किसी को पता नहीं था। अब देखिए वहां पे जाते हैं, हिली टेरेन्स हैं, चिली वेदर है, पैदल हजारों किलोमीटर सबमरीन के अंदर वो जो है ट्रेवल करते हैं। और सबमरीन में किस तरीके से, जहां की हवाई हमले हो रहे हैं, अलाइड यूएस एंड अलाइड फोर्सेस के हवाई हमले, कहीं पर भी अगर कोई सबमरीन कुछ दिख जाए, साथ में दुश्मन की सबमरीन्स भी हैं, साथ में समुद्र के अंदर माइंस भी बिछी हुई हैं, जरा सी अगर टकरा जाए तो वो ब्लास्ट हो जाएगी। और 400 किलोमीटर के तकरीबन उन्होंने एक रबर की डिंगी यानी कि रबर की बोट अगर हम कहें, 400 किलोमीटर उस समुद्री तूफान के अंदर आगे बढ़े जापानीज सबमरीन पकड़ने के लिए। और जिस किसी से मिले वो व्यक्ति उनके जादू से अछूता नहीं रह पाया। उन्होंने लिया किसको अपनी फौज के अंदर, कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा वो जनरल होगा जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंदर पकड़े गए वॉर कैदी थे। अब वॉर कैदियों के साथ जैसे सलूक होता है, उनका मनोबल कैसे दुश्मन तोड़ता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कैदी उन कैदियों को अपने साथ लेते हैं आईने के अंदर, और उनके अंदर वो मंत्र फूंकते हैं कि दोस्तों मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता, ज्यादा तनख्वाह मेरे पास नहीं है, मैं आपको रिसोर्सेज नहीं दे सकता जो कि ब्रिटिश आर्मी के पास है, मैं सिर्फ आपसे खून मांग सकता हूं। और वो सारे लोग ऐसे हों कि एक तरफ ब्रिटिश आर्मी में क्या हो रहा था कि लॉर्ड माउंटबेटन को डर लगने लगा कि जो इंडियन आर्मी, ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो सुभाष चंद्र बोस के पाले में जाना शुरू हो गए हैं और अब ये लॉयल नहीं रहे हैं। लेकिन नेताजी उल्टा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि मीगर सैलरी दे रहे हैं, मीगर रिसोर्सेज हैं जिनके पास, वो सैनिक जो हैं ब्रिटिश आर्मी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक जादू, एक जनरल का। क्यों? कि ही वॉज अ मैन टू लीड विद एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट, पीछे से नहीं। लोग कहेंगे क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जो मिशन था जिसके लिए निकले थे, क्या उन्होंने उसे प्राप्त किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मिशन लाल किले पे झंडा फहराना नहीं था,
उनका मिशन एक ही था, अंग्रेजों को किसी तरीके से भारत से बाहर निकालना। उस मीगर रिसोर्स के साथ उनकी आय ने सबसे पहले अंडमान निकोबार में झंडा फहराया, उसके बाद इम्फाल, कोहिमा, ईस्टर्न साइड से उन्होंने लड़ाई जीतनी शुरू करी। और लेट मी टेल यू, it was not the British army who was heavy on Netaji Subhash Chandra Bose. It was only the weather which played disastrous for him. लेकिन साथ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सरेंडर, जर्मनी के सरेंडर के बावजूद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो उन्होंने शुरू में, जो मैंने आपसे कहा था कि जो उन्होंने इच्छा पैदा करी थी कि मैं वो आयरन फिस्ट तैयार कर दूं कि उनकी कमर टूट जाए, हेल्पलेसनेस फील करना चाहे, नेताजी ऑलरेडी वो बीज बो चुके थे। और हुआ क्या, 1946 कुछ नेवल ऑफिसर्स ने ब्रिटिश वॉरशिप को उन्होंने कैप्चर कर लिया और उन्होंने वायरलेस पे मैसेज भेज दिया चारों तरफ और इंडियन नेशनल फ्लैग को उन्होंने होइस्ट कर दिया, यूनियन जैक को बाहर निकाल के। इंडियन आर्मी से कहा गया कि आप इनको इस इशू को एड्रेस करिए, आप नेवी को अटैक करिए, आर्मी ने मना कर दिया। एयरफोर्स से कहा गया कि आप अटैक करिए, उन्होंने मना कर दिया। पुलिस कांस्टेबलरी को कहा गया, पुलिस कांस्टेबलरी ने मना कर दिया। और उस दिन अंग्रेज और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक मसौदा भेजा गया कि हम भारतीय इंडिपेंडेंस के लिए लोगों को भेज रहे हैं इंडिया, और अब जो है भारत हमसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। मैं अपनी बात को विराम करने से पहले दो लोगों का, एक क्लेमेंट एटली का जो उन्होंने कहा था, इट वॉज the Bose-led INA that weakened the very foundation of the British troops and inspired the Royal Navy military in 1947, leading the British to believe that no longer they were in a position to rule India. And same thing was uttered by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ने भी कहा था कि it is no less contribution which the INA has given, and the torch was certainly taken by the Desh Nayak Subhash Chandra Bose. I would not like to utter Netaji henceforth. And with this, I leave this question to you, what Dr. Ghosh said. Would we like to just every year or at any prominent place see the photo of Subhash Chandra Bose, lay some flowers to him, or take Subhash Chandra Bose here? Thank you so much. Jai Hind and Jai Bharat. जय हिंद। ये नारा भी देश नायक सुभाष जी ने ही दिया था। ये थे एक फौजी के विचार, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आगरा कॉलेज के पूर्व छात्र के विचार। डॉक्टर ग्रुप कैप्टन जयपाल सिंह चौहान ने आगरा कॉलेज से अंग्रेज़ी में एमए किया है, हम गौरवान्वित हैं। और नाउ आई कॉल अपॉन मिस्टर संदीप अरोरा to read out felicitation for Sugata Bose. Felicitation in honor of Professor Sugata Bose, Member of Parliament Lok Sabha and Gardiner Professor of Oceanic History, Harvard University, USA. On behalf of Remarkings and on behalf of this august assemblage, I deem it an honor and privilege to greet and welcome you most heartily to this historical city of Sulakul,
embellished by the monument of love encased in alabaster. Your gracious presence here to launch the remarking special number titled Bose, Immortal Legend of India's Freedom, makes this occasion truly momentous. It is significant that this volume of contemporary creative and critical orientations, marking the completion of 16 years of journal's publication, is a precious homage to one of the most illustrious sons of Mother India, from distinguished statesmen, writers, academics, scholars, intellectuals, military officers, bureaucrats, entrepreneurs, social activists, monks, and freedom fighters. We are deeply indebted to you, sir, for not only enriching this ambitious dream project with your inimitable conversation with remarkings, but also for your enduring generosity in allowing us to publish 2 rare pieces from the proceedings of the 1973 International Seminar on Netaji. Your stellar role as a scholar and historian in the numerous domains of South Asian studies is amply sustained by your internationally acclaimed books and other publications. Your definitive biography of Subhash Chandra Bose, titled His Majesty's Opponent, is a veritable treasure house of insightful information, ideas, and perspectives on the multi-sided genius of this immortal legend of India. Your exemplary endeavor in expanding the range and scope of Netaji Research Bureau, founded by your revered father, Dr. Sisir Kumar Bose, has contributed immeasurably in kindling resurgence of interest in the life and work of Netaji. It's equally significant that unlike most contemporary politicians engaged in the game of hide and seek with citizens, even from their own constituencies, you are consistently engaged with missionary zeal to reclaim patriotism from the chauvinists, religion from the religious bigots, and politics from the corrupt. Rather than claim advantage of kinship with the legendary Subhash Chandra Bose, you have, on the contrary, emerged as a role model yourself for the restless youth of this country. Your vision of an egalitarian and federal India where historically marginalized people are fully empowered as equal citizens genuinely resonates the ideals of Netaji. I assure you, sir, that impact of your gracious presence in our midst and your inspiring utterances on Subhash Chandra Bose shall motivate us further in transforming ourselves both as individuals and part of the larger collective called India. Warmest good wishes and grateful thanks. Thank you so much, Mr. Sandeep Arora, Executive Editor, Remarkings. और अब मेरा निवेदन कि जो हमारे विश्वविद्यालय के नायक हैं कुलपति जी से कि वे शॉल उड़ाकर प्रोफेसर सुगाता बोस को सम्मानित करें। प्रोफेसर सुगाता बोस जी देश नायक सुभाष चंद्र बोस के विचारों को एक मशाल की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और अब मेरा रिमार्किंग्स के प्रधान संपादक प्रोफेसर निबीर के घोष और संपादक ए करुणाकर से निवेदन कि वे शॉल उड़ाकर हमारे कुलपति महोदय जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में आकर एक क्रांति ला दी है उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत आभार अध्यक्ष एवं कुलपति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। Now a precious moment that will give us a glimpse of
the real collection after we have seen the image of it. और अब उसके लिए मैं सभी जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो इस लॉन्च में हमारे साथ रहें. मेरा निवेदन डॉक्टर अनिल राजन, डॉक्टर देवाशीष, प्रोफेसर अब्दुल शबन, प्रोफेसर शंकर दत्त, प्रोफेसर सुगम आनंद, प्रोफेसर असीम, कृपया वे मंच पर आएं. स्वामी सुजियानंद, आपसे करबद्ध निवेदन कि इस लॉन्च में हमारे साथ रहें. डॉक्टर जयपाल चौहान. Thank you so much, all the luminaries who were present here on the days for the launch. Thanks a lot. और अब वो क्षण आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि हम एक ऐसी हस्ती को आज यहाँ सुनेंगे जिन्हें अभी तक हमने केवल टीवी पर देखा था. Professor Sugata Bose. Professor Sugata Bose is Gardiner Professor of Oceanic History and Affairs at Harvard University, USA, Member of Parliament in the current Lok Sabha, and the grandnephew of Subhash Chandra Bose. A PhD from University of Cambridge. His field of specialization is modern South Asian and Indian ocean history. A recipient of Guggenheim's Fellowship, his publications include Pageant Labor and Colonial Capital, 100 Horizons, the Indian Ocean in the Age of Global Empire, Modern South Asia History, Culture, Political Economy, Nationalism, Democracy and Development, Credit Markets and the Agrarian Economy of Colonial India and South Asia and World Capitalism, and his most recent book in his Majesty's Opponent, Subhash Chandra Bose and India's Struggle Against Empire, 2011. An eloquent orator, he has been invited for lectures and talks in almost all the important countries of the globe. In its जब डॉक्टर घोष इंटरव्यू ले रहे थे प्रोफेसर सुगाता बोस का, तो उन्हें जब ये जो सवाल मैंने आपको पहले बताया था उसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा सवाल था कि जब वो लोकसभा में होते हैं तो उनका टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है. एंड ही आंसर्ड, व्हेन आई स्पीक इन पार्लियामेंट आई सी माई सेल्फ as a teacher lecturing in a massive online course on political ethics. I think I communicate quite well with the 18 to 25-year-old age group. I hope to persuade this younger generation of the virtue of seva, that they can achieve a sense of deep fulfillment in living for others less fortunate than themselves. I would urge contemporary youth never to lose faith in India's destiny. However, they should avoid the snare of narrow nationalism. True love for the motherland and can only bloom in the garden of a larger humanity. I invite Professor Sugata Bose
to address the August gathering. Professor Sugata Bose. Vice Chancellor Arvind Kumar Dixit, Professor Nibir Ghosh, Professor Sunita Rani Ghosh, Professor Karunaker, contributors to this remarkable special issue of the journal Remarkings, distinguished citizens of Agra. It is a true delight for me to be able to join you on the occasion of the formal launch of the Remarking special issue on Netaji Subhash Chandra Bose. In this journal, which has been so lovingly put together by the editors and the contributors, there is an interview with Zeenat Ahmed. She is the widow of Mehboob Ahmed, who in 1945 was military secretary to Netaji Subhash Chandra Bose. He took that charge once Prem Kumar Saigal had to be sent to the front to fight in the rearguard action of the INA in Burma. I had the good fortune of interviewing Uncle Mehboob, as I called him, Mehboob Ahmed, in Patna in 1991. At that time, I was putting together a documentary film titled Netaji and India's Freedom for the Netaji Research Bureau. And I have to tell you that I had great difficulty in filming the interview with Mehboob Ahmed. Each time I would roll the camera, he would just break down, and tears would flow down his eyes. Eventually, after many attempts, we were able to start the interview. And then he explained to me on camera, you see, decades have passed, but why am I still sort of breaking down? And he said that, you know, I have had the privilege of working with Mahatma Gandhi for a few months after independence. I have had the great honor of working with Pandit Jawaharlal Nehru. Mehboob Ahmed was in our foreign service. He served as our ambassador to Canada. But he said that I have great respect for Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru. But there was only one leader I was prepared to die for, and that was Netaji Subhash Chandra Bose. I'm afraid I have to disagree with Professor Shankar Dutt. We cannot give up the appellation Netaji. It was given with great affection to Subhash Chandra Bose by the common soldiers of the Azad Hind Fauj, of the Indian National Army. I can understand your frustration, particularly in this state of Uttar Pradesh, when this wonderful appellation Netaji is attached to people who may not quite deserve it. I'm a historian, and I typically don't make forecasts about the future. But this much I can tell you, that 100 years from now, there will be only one Netaji who will be recognized all across this South Asian subcontinent, and that is Netaji Subhash Chandra Bose. Of course, I have great love for the other appellation, Deshanayak, as well. In fact, when a Bengali edition came out of my book, His Majesty's Opponent, I decided to title it Deshanayak. You know, that was what Rabindranath Tagore called Subhash Chandra Bose in 1939. 18th of March is a very auspicious day. It's a very significant day in the history of India, particularly India's freedom struggle. It was on the 18th of March that the Azad Hind Fauj crossed the Indo-Burma frontier and planted the Indian tricolour on
Indian soil. Of course, you know, Netaji had rather rashly announced at a public meeting in Singapore in July of 1943 that he was going to be on Indian soil before the year was out. Fortunately, the Japanese handed over the islands of the Andaman and Nicobar Islands, Nicobar, to the Azad Hind government. And so Netaji was able to visit the Andaman, pay his tribute to generations of revolutionaries who had served life sentences or had been executed in the cellular jail. But it didn't take him very much longer to come to the mainland. The INA reached Arakan already by February, and then, of course, the major thrust towards Imphal and Kohima began in March of 1944. And this Azad Hind Fauj, this great army of liberation, had Hindus and Muslims, Sikhs and Christians. They had dined together in the same messes before they went to fight together and shed their blood together so that our country may be free. There were, of course, professional soldiers, the ones whom the British felt were drawn from the martial races. There were Punjabis and Pathans who had served in the British Indian Army, but after the fall of Singapore, they joined the Indian National Army. But there were also soldiers who had been civilians. There were very poor Tamil rubber plantation workers who worked in Malaya. The Tamils, according to the British, were a non-martial race. 18,000 of them joined the Indian National Army. So this was an army of liberation that had attracted Indians belonging to all religions, all linguistic groups, every possible region of the country. And Netaji Subhash Chandra Bose did not ask them to give up their identities, their linguistic identities, or their religious identities. He did not believe in secular uniformity. He, like Rabindranath Tagore, knew how to respect differences. But then he could inspire his followers to rise above those differences and build an overarching Indian unity. That is the kind of unity that we must strive for today. We should move beyond the very simple dichotomy between secularism and communalism. That will not take us very far. We have to learn from Rabindranath Tagore, from Mahatma Gandhi, from Netaji Subhash Chandra Bose, to respect our diversity, celebrate our differences, and on the basis of that respect and celebration, create Indian unity. Tagore had said, where there is genuine difference, it is only by respecting that difference and then restraining it in its proper place that you can achieve unity. You cannot accomplish unity by issuing legal fiats that everybody is one. And that is what Netaji Subhash Chandra Bose showed in practice when he led the Indian National Army as its supreme commander. And Mahatma Gandhi recognized that that was the greatest contribution that his rebellious son had made to the cause of India's freedom. You know, I often feel very embarrassed when I'm introduced as a grandnephew of Netaji. And that is because my father had always told me that Netaji believed that his family and country were coterminous. And therefore, if I belong to Netaji's family, so do all of you who are sitting here in this room. On a winter afternoon in December of 1940, my father's Ranga Kaka Babu, his radiant uncle, had called him
he made him sit beside him on his bed and looked at him very intently and asked him a very simple question in Bengali. Amar ekta kaj korte parbe? Can you do some work for me? And from that moment onwards, my father never stopped doing Netaji's work. He continued to make sure that the legacy of Netaji, the best traditions of India's freedom struggle were kept alive. And he was still working in Netaji Bhavan, in the room next to Netaji's bedroom at 38 by 12 Elgin Road on the day that he passed away on the 30th of September of 2000. And this kind of loyalty that Netaji Subhash Chandra Bose inspired among his followers is something that I've seen among practically everyone, every man and woman whom I have met who had fought alongside Netaji for India's freedom struggle, for India's freedom. You know, I have had the good fortune of meeting S.A. Iyer, who was the Minister of Publicity of the Azad Hind government. He would sit in the southern veranda of my grandfather Sharat Chandra Bose's house, Woodburn Park, and describe to me how, sitting through the night of 19th October, Netaji had composed the proclamation of the government of Free India. He did not once lift his eyes from the paper on which he was writing. He did not strike out one word, and that was the proclamation that he read in English, but it was also rendered in Hindustani and Tamil in Singapore on the 21st of October. I have met Abid Hassan, who was from Hyderabad, Deccan, and he was Netaji's only Indian companion on the submarine voyage from Europe to Asia. And he used to tell me how once Netaji was dictating a speech to him. Among the many speeches that he dictated to Abid Hassan on the 90-day submarine voyage was one that he was going to deliver to the women's regiment of the INA, the Rani of Jhansi regiment, which was just in his imagination at that time, but he was already preparing. And of course, his submarine was being attacked. And once when such an attack took place, told us that Subhash Chandra Bose continued his dictation and said, you know, Hassan, I have dictated this sentence twice to you and you've still not taken it down. And the German commander of the submarine, you know, after the incident was over, broadcast on the system, urging the German sailors to emulate the bravery of the great Indian leader who was traveling with them on this submarine. So I had this opportunity to meet Saigal, Dhilan, and Shanawaz, Lakshmi Saigal, Janaki Thevarathi Nahappan, the leaders of the Rani of Jhansi regiment. And I could see, you know, how deeply loyal they were to their leader. And all of them would break down and weep when they reminisced about Netaji Subhash Chandra Bose. And I think that was because here was a leader who never asked his followers to take any risk that he himself would not take. He led by example. That was the quality of his leadership. My father later on had to suffer imprisonment. He was in Presidency Jail in Calcutta, where he was brought down by typhoid. So he was home interned for a while. Then the British gave him permission to travel from his home up to medical college, where he was just a medical student, not yet a pediatrician. He was a medical student, 20-year-old medical student. Later on, of course, he became one of India's pioneering pediatricians.
But I'll just tell you the story, how this sort of happened. And while he was home interned, of course, Netaji's messengers arrived by submarine on the Kathiawar coast in Gujarat and made contact with my father. And he was trying to organize a revolutionary underground in India. And the hope was that there would be a civilian uprising to coincide with the armed thrust of the Indian National Army from the northeast. The British were eventually able to break up this group, even though radio contact was established with Netaji Subhash Chandra Bose from Calcutta by the time he had moved forward to Rangoon in January of 1944. And after the British were able to break up this group, of course, my father was imprisoned in an underground cell of the Red Fort. Then he was kept in solitary confinement for several months in 1944, 1945 in the Lahore Fort. And finally, he was in Lalpur jail. And my grandfather, Sharat Bose, and he were among the last of the political prisoners to be released in September 1945, after the end of the Second World War. After my father's release, he said that in the streets of Lalpur and Lahore, he heard a new slogan. He heard a slogan, Bose Khandan Zindabad. And he heard that slogan all the way as he was taken by train from Lahore to Calcutta. So his father, Sharat Chandra Bose, called him and said that don't let these slogans turn your head. Always remember that this is nothing but Subhash's reflected glory. And he asked my father to go back to his medical studies, become a doctor, and then he said once he had completed his studies, if later on in life he wanted to do public service of whatever kind he wished, he would be free to do so. So that is how my father became a pediatrician. But of course, Netaji's, touch is something that would stay with some, his followers forever. Even while he was a very, very busy pediatrician, he decided that he would set up the Netaji Research Bureau. He did so 60 years ago. In Calcutta, we are observing the 60th anniversary of the establishment of the Netaji Research Bureau. And there he collected everything that he could find connected with Netaji. Netaji's letters, Netaji's speeches, Netaji's manuscripts, photographs. We have thousands and thousands of photographs of Netaji Subhash Chandra Bose and the Indian freedom struggle. His voice tapes, INA music, film footage of Netaji from all over the world, from different countries of Europe and Asia. And that, I think, was a very important task to accomplish. He believed that the future generations of Indians will have a lot to learn from Netaji's Book of Life. So the real files, the real genuine materials about Netaji Subhash Chandra Bose were collected over half a century, by now 6 decades. And some of the media discussion about files is somewhat irrelevant because these files have not revealed anything of real significance about either the life or the mortal end of our deathless hero, Netaji Subhash Chandra Bose. But the work has been done, and the younger generation will continue to be able to learn from Netaji's Book of Life. But it is very important that this work is done all over the country. And I say this because I have seen, and have said so in my interview with Professor Nibir Ghosh, that I often find that Netaji is even more admired, even more revered in provinces outside Bengal. When I go to Punjab, I see the kind of adoration they have for Netaji Subhash Chandra Bose.
When I go to Tamil Nadu, I see the same, because most of the Indian expatriates in Southeast Asia were from South India, mostly from Tamil Nadu, but there were other Telugu speakers and Malayalam speakers as well. Think of UP. Many of the speakers referred to his election campaign in 1939. He won UP. He won Bihar. He lost Gujarat, but that was Mahatma Gandhi's home province. He lost Andhra Pradesh because Pattabhi Sitaramaiah came from there, but he won the other three southern states, Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. But this last December, I went to Gujarat, and I was amazed to find the kind of respect and reverence that the people of Gujarat have for Netaji Subhash Chandra Bose. In fact, there I gave a lecture which was titled Between Gujarat and Bengal, on the relationship between Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose. And today I would like to emphasize that sometimes we exaggerate the differences between Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose. Yes, they had some political differences in 1939 about the strategy to be adopted to win Indian independence. But there was no ultimate parting of the ways. They came together once more in their aims and ideology as soon as Mahatma Gandhi gave the call for the British to quit India in 1942. And it was Subhash Chandra Bose who for the first time referred to Mahatma Gandhi as the father of our nation. In a broadcast from Burma, he said, "Father of our nation, in this holy war, we seek your blessings and good wishes." And Mahatma Gandhi reciprocated that sentiment. He referred to Netaji Subhash Chandra Bose as the prince among patriots, a patriot among patriots. And very recently, I gave the B.R. Nanda lecture in Delhi on unity or partition, Mahatma Gandhi's last stand, 1945 to 1948. And for that lecture, I read everything that Mahatma Gandhi said and wrote about Netaji Subhash Chandra Bose, among other things, between 1945 and January 1948. And every reference to Netaji Subhash Chandra Bose by Mahatma Gandhi is a eulogy. And he is referring to Subhash Chandra Bose as Netaji throughout. It is Mahatma Gandhi who is almost saying that Subhash Chandra Bose is my leader. And I genuinely believe that if Mahatma Gandhi had his erstwhile rebellious son by his side, if he had Netaji Subhash Chandra Bose by his side in 1947, then the saint and the warrior working together side by side would have been able to prevent the tragic partition of our country. We, of course, see Netaji Subhash Chandra Bose as a great warrior hero. He was, in fact, the only soldier statesman in modern Indian history. But he was also a philosopher. He was a very thoughtful person. And he was a far-sighted leader. He believed that India will be free and that we must plan for the social and economic reconstruction of free India. And that is why, when I was editing his collected works with my father, which have been published in 12 volumes in English and Bengali and Hindi, I found that here was someone who gave us a blueprint of what Indian society should look like, how we have to rebuild India's economy. In his writings and speeches during the 1920s, the 1930s, and the 1940s,
And the day before yesterday, I was speaking in Parliament on the defense budget. And I started by quoting Subhash Chandra Bose from his speech to the faculty and students of Tokyo University in November 1944, in which he said that free India must have three priorities: the organization of our national defense, the removal of poverty, and the provision of education for the Indian masses. And these three still, remain our priorities. But beyond that, beyond being a great warrior hero, beyond being a far-sighted political thinker, he was also a human being. And I'm very happy that in this special issue of Remarkings, there has been an attempt to uncover and present the human side of this great hero. And I'm especially happy that Sunita Rani Ghosh has actually written an article focusing on the letters written by Netaji's wife, Emily, to Subhash Chandra Bose. And she has, of course, made an interesting point. Volume 7 of the collected works was titled by me, actually, as Letters to Emily. Now, we did that because these were Netaji's collected works, but we also published Emily's letters to Subhash. It is just that Emily preserved all 165 letters. She gave us 162 at that time. 165 letters that Subhash Chandra Bose had written to her between 1934 and 1941. And Subhash Chandra Bose, unfortunately, given the tumult of his life, had lost most of the letters that he had received from her. But there were about 18 or 20 that we were able to find in a cigar box belonging to my grandfather, Sharat Chandra Bose, and we were able to include them. She was somebody who was even more forgotten, but she also made a huge sacrifice. Throughout the 1930s, she helped Subhash Chandra Bose to write his major book, The Indian Struggle. She also helped him make contacts with all of the European countries. She was the one who was corresponding with leaders of the Irish independence movement. Subhash Chandra Bose had a very successful visit to Ireland in February of 1936. And then imagine that human sacrifice. In February 1943, Subhash Chandra Bose boarded that submarine, leaving behind not only his wife, but also his 2-month-old daughter, Anita, my aunt Anita. Because the world situation was such then that it was not possible to have an armed thrust from the northwest once Germany had invaded the Soviet Union. While Japan had reached the gates of India, they were already in Burma. So that took priority. And I knew my grandaunt Emily very well. My mother has recently written a book, Emily and Subhash, which has been published last year from Niyogi Books. It has also been published in Bengali in Calcutta. The first time that I met her, I don't remember. I only have a sense from my mother's memories. I was only 3 years old. In December of 1959. We visited my grandaunt Emily and my aunt Anita in Vienna. But when I was a student in Cambridge in England, I would travel to Vienna to see her. And she was a woman of utmost dignity, always avoiding the public eye, but deeply interested in India, as Sunita Rani Ghosh has shown even from these letters.
understanding every detail about Indian society, about Indian politics. But of course, even though her destiny was tied up with India, she never actually visited India, brought her to India as soon as she was 18 years old. So that human side of Netaji Subhash Chandra Bose also needs to be remembered. And even in writing my own book, His Majesty's Opponent, I felt that the life was more fascinating than the legend. You know, what a life. Of course, a life of adventure, but a life which was, in his own words, as he wrote in his autobiography, An Indian Pilgrim, My Faith Philosophical, that the cardinal principle of his life was love. That is what he stated in his unfinished biography, of which he wrote 10 chapters in 10 days, sitting in Bad Gastein, a hill resort in Austria. So let us also recognize the human being that he was, Netaji Subhash Chandra Bose. And I'm truly delighted that all the multiple facets of this many splendored personality have been brought out in the 31 contributions of this journal, Remarkings. But of course, the lesson that he leaves for us today is that of great sacrifice. He learned the virtues of both seva and tyag when he took over the leadership of the Indian independence movement in the Cathay Hall in Singapore. Rashbihari Bose handed over the leadership of the Indian independence movement to him. He made a stirring speech in Hindustani. And he had said very clearly then, "Hum zinda rahe ya nahi, wo koi baat nahi hai. Sahi baat ye hai, aham baat ye hai, Hindustan azad hoga." So I will simply want to end, since I am in UP today, in Agra, a Hindi-speaking heartland of India. Many, many years ago, you know, there's of course an article on Shyam Benegal's wonderful film on Netaji. But when I was just 10 years old, I watched a film by Hemin Gupta on Netaji Subhash Chandra Bose. And I went to see it in the Boshusri Cinema Hall in Calcutta. And I was just amazed at what I saw. I mean, here was a feature film being shown. And the entire audience, the house was of course full, was just getting up and shouting Netaji Zindabad, Jai Hind, as they, you know, watched the film, the movie. And it had a very beautiful song. The theme song was very beautiful. And even though I'm not a singer, I will, you know, I will just perhaps try to sing a few lines of it for you, because Netaji loved music. You see that in the letters that he wrote from Mandalay jail in Burma. He made sure that the Indian National Army had a wonderful orchestra. The INA songs are beautiful, whether it's Subhashji, Subhashji, or Hum Delhi Delhi Jayenge, Hum Apni Hind Banayenge, or Sabse Uncha Hai Duniya Mein Jhanda Hamara, Netaji Zindabad Azad Karenge. There was a wonderful composer of songs, a lyricist called Mumtaz Hussain, who wrote many of these songs, and Ram Singh Thakur set many of them to music. And of course, you know the most famous marching song of all, Kadam Kadam Badhaya Ja, Khushi Ke Geet Gaye Ja, Ye Zindagi Hai Qaum Ki, Qaum Pe Lutaya Ja. Now, unfortunately, in the 1990s, that song was adopted as the marching song of the Indian Army. But the song that I will sing for you is something that is very important, because that is the message that needs to go out to India. Suno re suno, suno re suno, desh ke Hindu Musalman,
सुनो बहन भाई सुनो सुनो नौजवान, ये सुभाष की कथा इसमें है बड़ी बथा, इसमें कहीं आग है और कहीं तूफान। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई सुनो सुनो नौजवान, ये सुभाष की कथा सुनो रे। सुनो देशवासियों, सुनो देशवासियों, हिंद के निवासियों, उसने तो गजब किया भाग्य ही पलट दिया, भर दिया जय हिंद के नारे से आसमान। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई सुनो सुनो नौजवान, ये सुभाष की कथा सुनो रे। नर वो ना जवाब था, नर वो ना जवाब था, जिंदा इनकलाब था, काम उसने वो किया हिल गया ब्रिटानिया, उसकी ही आजाद हिंद फौज थी महान। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई सुनो सुनो नौजवान, ये सुभाष की कथा सुनो रे। एक दिन वो खो गया, एक दिन वो खो गया, हमसे जुदा हो गया, क्या महल क्या झोपड़ी सबके आंखों परी, लौट के आया नहीं वो दूर का मेहमान। सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, सुनो बहन भाई सुनो सुनो नौजवान, ये सुभाष की कथा सुनो रे। जय हिंद। मेरा सभी से निवेदन कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर प्रोफेसर सुगाता बोस को स्टैंडिंग ओवेशन दें ऑफ दिस ग्रेट डे एंड म्यूजिकल utterings, lyrical utterings, all we say is the music in my heart I bore. The music in my heart I bore long after it was heard no more. Thanks a lot, sir. और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सभागार में मौजूद हर शख्स मेरी ही तरह इस समय रोमांचित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुला रही हूँ हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद दीक्षित जी, जिन्होंने केवल 3 महीने पहले इस विश्वविद्यालय का चार्ज लिया है, कमान संभाली है। और मुझे कहते हुए दुख है कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वह पिछले वर्षों से कुछ अच्छी नहीं चल रही, और अगर मैं ये भी कहूँ कि बहुत ख़राब चल रही है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इससे इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हर शख्स बहुत मर्माहत है, पीड़ित है, दुखी है। जब से सर ने चार्ज लिया है
एक उम्मीद की किरण ज़रूर जागी है कि शायद कुछ बदलाव आएगा, और उस बदलाव की कुछ झलकियाँ हम देख भी चुके हैं। लॉ का जो इवैल्यूएशन हुआ था और उसका केवल 1 हफ्ते में जब परिणाम घोषित हुआ तो लगा हाँ, हमें आशावादी होने का हक है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका यहाँ स्वागत प्रोफेसर दीक्षित, और हम सभी आपके साथ हैं। आप इस सकारात्मक बदलाव की अपनी कोशिश को जारी रखिए। इस विश्वविद्यालय का हर शिक्षक, यहाँ बहुत सारे मेरे फैकल्टी के जो साथी हैं वो मौजूद हैं, मैं उन सभी की ओर से ये विश्वास दिलाती हूँ आपको कि हम सब शिक्षक भी इस परिवर्तन के लिए कटिबद्ध हैं। बस आपका नेतृत्व हमें चाहिए। और मैं दुष्यंत कुमार की पंक्ति अब ये भी मुझे ना जाने कहाँ से याद आ गई कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप बस पत्थर उछालिए, पीछे से बहुत सारे पत्थर उछालने वाले हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अध्यक्षीय संबोधन के लिए आगरा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रांतिकारी परिवार से संबंधित प्रोफेसर सुगाता बोस, माननीय सांसद, प्रोफेसर करुणाकर निबिर के घोष जी, और सुंदर संचालन करने वाली मैडम घोष, सम उपस्थित विद्वान महिला पुरुष छायाकार मित्र, पत्रकार बंधु। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद के पहले आदमी को सोचना पड़ता है कि कितने पूर्व वक्ता कितने रोचक तरीके से पूरा विषय रख करके गए। विषयों की एक तो पुनरावृत्ति भी होती है और दूसरा कार्यक्रम के समाप्ति के क्षण निश्चित रहते हैं। तो मैं आप सबसे ज़्यादा समय लेकर के अभी जो मेरे बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे गए हैं, मैं नाराज़गी आपकी मोल नहीं लेना चाहूँगा, कम शब्दों में अपना विषय रखूँगा। आपने कहा कि मैंने कुछ समय में पहले प्रयोग किया, क्रांतिकारी परिवर्तन किए। मैंने यहाँ करके कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है उसी से मेरा विषय आगे का निकलने वाला है। कानपुर से आगरा आता हूँ, मेरा नाम ले रहे हैं, वैसे तो सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मंच पर विराजमान प्रोफेसर निबिर के घोष और सामने बैठे डॉक्टर विजय सिंह जी, ये दो आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक हैं। आगरा आने के पहले तक न मैंने इन दोनों मित्रों का नाम सुना था और न कभी साक्षात्कार हुआ था। यहाँ आने के बाद हमको ये दोनों लोग मिलते हैं, मैं पूछता हूँ यहाँ पर क्या है। केवल एक विषय स्मरण कराते हैं कि जैसा अभी सुनीता जी ने कहा कि कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने केवल इन दोनों लोगों को स्मरण कराया कि भाई आपने जब ज्वाइन किया था उस समय आगरा विश्वविद्यालय क्या स्थिति थी, आज आप सेवानिवृत्त हैं तो क्या स्थिति है। मिलकर के दोनों काम करें, उसी स्थिति को हम वापस ले आएंगे। इन दोनों लोगों ने माना। 3 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपके सामने है। एक, हर चीज की एक रणनीति होती है, स्ट्रेटजी होती है। मैं पिछले 5-7 दिन से एक अपनी रणनीति पर मैं काम कर रहा था। मेरा अपना सोचना है कि गांव का रहने वाला हूं, तो कुश्ती अगर होगी तो अपने अखाड़े में होएगी। हाँ, अगर लाइन ऑफ एक्शन तय करना है
स्ट्रेटेजी है वो अपने हिसाब से तय करेंगे। यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, कल रात के 9 बजे तक बहुतों को प्रवेश पत्र नहीं मिला था, रात के 9 बजे तक। जहाँ एक ये प्रश्न है, वहीं पर 2 कॉलेज ऐसे निकले हैं, रात के 12 बजे अपने छात्र संख्या वेरीफाई करके 2:30 बजे रात को प्रवेश पत्र निकाले हैं। ये विश्वविद्यालय बिगड़ी स्थिति में है, इसको ठीक करने के लिए कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़ेंगे। मैंने कहा था कि परीक्षा 18 से होगी तो होएगी। प्रवेश पत्र आज परीक्षा हुई है, सारे जिन जिन सेंटर्स पर परीक्षा हुई है सबके प्रवेश पत्र मिल गए हैं, वहां पर कॉपी पर्चा मिला हुआ है। क्या इस समय क्या स्ट्रेटजी है? हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। नेताजी का इतना चर्चा काया, नेताजी के भी मन में कुछ प्लान था। आजाद होगा, कैसे आजाद होगा? हर चीज सड़क पे बता के करेंगे क्या? जो चीज होगी समय के अनुसार होगी। जो कल तक फीस नहीं भरने वाले थे, आज मैं कुलपति के नाते कह रहा हूं, कितने लोगों की फीस मेरे पास आई है। ये मेरी नाक की लड़ाई नहीं है, विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा है, उससे ही मेरी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, मैं उससे अलग नहीं हूं। एक भी छात्र को शुल्क न जमा करने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया, केवल आज की अनुमति दी है। तो ये विश्वविद्यालय को पटरी पर लाना है तो कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। जो परिवर्तन ये हमने आगरा विश्वविद्यालय का इतिहास अपने 2 शिक्षकों के माध्यम से किया। अब प्रोफेसर सुगता बोस ने कहा, उनके साथ जो सांसद हैं उनके मन में जैसा भाव आना चाहिए वो नहीं आता है, जैसा उनको एक व्यवहार करना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब हमको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। हम अपने इतिहास के, मैं तो केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, मेरा एक अपना विचार है कि हम जब कहीं इतिहास की बात करते हैं तो हम 50 साल की बात करते हैं, कोई 100 साल की बात करेगा, कोई 300 साल की बात करेगी। हम 5000 और उसके आगे की बात क्यों नहीं करेंगे? हम आधा बताते हैं, क्या? अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके बाद आगे क्या क्या कहते हैं? धर्म हिंसा तथैव च। केवल अहिंसा परमो धर्म से काम नहीं चलने वाला है, आगे का उसका है धर्म हिंसा तथैव च। हम सेकुलर हैं, धर्म का जो अनुवाद है रिलीजन के साथ यदि करेंगे, कठिनाई आ रही है, आगे आने वाली है। धर्म क्या है? मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। घृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निद्रा धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इन 10 लक्षणों में क्या उपासना पद्धति कहीं आई है? आप मंदिर जाएंगे धार्मिक होंगे, मस्जिद जाएंगे धार्मिक होंगे, गिरजा जाएंगे, चर्च जाएंगे धार्मिक होंगे। और यदि इन स्थानों पर नहीं भी जाएंगे, लेकिन जो 10 लक्षण हैं, सत्य बोलिए, जरूरत से ज्यादा संग्रह न करिए, चोरी न करिए, शुचिता के साथ रहिए, ये जीवन जीने की जो कला है, इनका अगर पालन करते हैं आप धार्मिक होंगे। आप अगर उपासना पद्धति कुछ भी है, नहीं भी है, साकार को माने, निराकार को माने, किसी को भी ना माने, लेकिन इन 10 लक्षणों का यदि आप पालन करते हैं तो आप धार्मिक हैं। बात तो यहां से शुरू होगी। और जब आप धर्म करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तब क्या कहेंगे? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एक उपासना पद्धति को मानने वालों का ही केवल कल्याण नहीं होना है, यह सबके लिए है। और भारतीय जीवन दर्शन आगे भी कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधा कस्वित धर्म। जो कुछ भी है ये सब परमात्मा का है।
हम इसके ट्रस्टी मात्र हैं, त्याग पूर्वक उपयोग करें। हम अपना काम करें, दूसरे भी करें, यह है धर्म का आचरण। और जब हम धर्म का आचरण करते हैं, विश्व मंगल की कामना करते हैं, तो हम दूसरे का अहित नहीं करते। लेकिन धर्म उदाहरण देखने पड़ेंगे। उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज का है। यह है भारतीय जीवन दर्शन। क्या है उदाहरण? उनके सैनिक किसी को पकड़ करके लाते हैं, शिवाजी के सामने प्रस्तुत करते हैं। शिवाजी सम्मान के साथ कुरान का सम्मान करते हैं और गौहर बानू से कहते हैं, काश मेरी मां यदि सुंदर होती तो मैं आज कुरूप न होता। यह है भारतीय जीवन दर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज के सिपह सालारों में कितने ऐसे थे जिनकी उपासना पद्धति क्या थी? जो इतिहासकार बैठे हुए हैं वो बताएंगे ना क्या है। ये 3 साल का, 30 साल का, 300 साल का इतिहास यदि लेना है तब लेंगे। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये जो भूभाग है ये मेरा राष्ट्र है। ये वर्णन कहाँ है? बृहस्पति पुराण में है। अगर इतिहास का है विषय तो पीछे के साथ लीजिए ना। विज्ञान हम बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मैथमेटिशियन नहीं थे। बौधायन का कालखंड पहले है। सुलभ सूत्र में वर्णन करते हैं। ये तो हमारे घोष साहब बड़ा दुष्कर कार्य कर रहे हैं। आज के इंटरनेट के समय में रिसर्च करने वाला आदमी सीधे सीधे गूगल पे जाता है, साइंस का हुआ तो साई फाइंडर पे जाता है, वहीं पर सीधा सीधा टॉपिक डाला और पूरी रिसर्च निकल करके आ जाती। उसको किताबें पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? आज के समय में जो 16 साल से आप जिस पत्रिका को अनवरत चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, वहां आप ये लेखन काम कर रहे हैं। हम भी आपके काम में बाधा उत्पन्न करते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़े दिन जरा पढ़ाई लिखाई का उस काम कर दो, विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, आप मेरी मदद कर दो। ऐसे समय में ये जो लेखन की परंपरा है इसको आप बढ़ा रहे हैं। दूसरा किसके साथ कर रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए वैसे कर रहे हैं। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। लेखन का इतना दुष्कर कार्य, और उसके बाद में आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए विषय करें। नेताजी क्या है? वास्तव में वो नेता हैं। और ये जो जिनके नाम पर आज नेता हैं, ये नेताजी थे, नेताजी हैं। जैसे गंगा नदी में बरसात के समय में नदी नाले आने के बाद 10-5 किलोमीटर चलने के बाद निर्मल नीर बहता है, यह है भारतीय संस्कृति। जो समाज त्याग सम्मान के साथ आएंगे, भामा शाह का तो नाम रहने वाला है, बाकी ये सब कालबाह्य हो जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमको भी अपने अनुसार आचरण करते समय हमको अपना रोल मॉडल तय करना पड़ेगा। ये जो 1835 लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो विषय है, इसके पीछे भी हमको जाना पड़ेगा। हमारा श्रुति का कल्चर रहा है, एक से लेकर के दूसरे तक कंठस्थ करके जो हम करते रहे हैं, उसमें हाँ कंप्यूटर का समय है तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। जितने आधुनिक संसाधन हैं उनका सबका उपयोग करेंगे, लेकिन त्याग पूर्वक उपयोग की जो प्रवृत्ति दी गई है, क्या मेरे काम करने से दूसरे का नुकसान न हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारे प्राध्यापक ने कहा, एक रिसर्च का विषय है हिस्ट्री में, पर्शियन व्हील की चर्चा करते हैं। पर्शियन व्हील आता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो किसी न किसी रथ के ऊपर ही आरूढ़ होते हैं। वो पर्शियन व्हील और ये दूसरा व्हील कहाँ से है, इसका आपको संबंध निकालना पड़ेगा। आजाद भारत होने के बाद किनको महिमा मंडन होना चाहिए और किनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, समय के अनुसार ये सब आएंगे। और थोड़ा थोड़ा कहते ना, दिन रात जो प्रयास हो रहा है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से देश समाज के लिए जो काम करने वाले हैं, इतिहास में उन्हीं का स्थान रहने वाला है।
और बाकी ये सूर्य अगर है, कभी बादल आते हैं, लेकिन समय पर अपने सूर्य अपने प्रकाश से ही चमकता है, सूर्य को कोई दूसरा प्रकाश नहीं दे सकता है। आपने हमको बुलाया, धैर्यपूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति जी। और जो कोशिश है बदलाव की, मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ, ज़रूर जारी रहनी चाहिए और हम सब आपके साथ हैं। और अब मैं निवेदन कर रही हूँ प्रोफेसर निबिर के घोष से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सुगाता बोस को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर सुगाता बोस जी। मेरा निवेदन एडिटर ए करुणाकरन जी से कि वे स्मृति चिन्ह देकर माननीय कुलपति जी का सम्मान करें। बहुत बहुत आभार माननीय कुलपति जी। मेरा निवेदन चीफ एडिटर प्रोफेसर निबिर के घोष और एडिटर ए करुणाकरन से कि वे आज के हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करें। Thank you so much, Dr. Anil Rajan. Thank you so much, Professor Shankar. Okay, thank you. Osip. Sugata Bose, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha. Professor Arvind Kumar Dixit, Honorable Vice Chancellor of B.R. Ambedkar University, Agra. Professor Nibir K, Chief Editor, Remarkings. Professor Sunita Rani Ghosh, Editor, Remarkings. Professor Shankar Dutt, Professor Abdul Shaban, Dr. Anil Rajan, and Sri Debasish Chakravarti, Professor Sugam Anand, the eminent persons who have come from outside Agra, and the honorable citizens of Agra, press, print media, electronic media, and my dear friends. On behalf of Remarkings, its life members and contributors of this special issue on legendaries Subhash Chandra Bose, it's my privilege to propose vote of thanks. We have heard recorded speeches of Netaji. We have seen documentaries on Netaji. We have seen a movie on Netaji. But today's speech by Professor Sugata Bose was totally a visual effect in front of us. We could know the multifaceted personality of Subhashji, Netaji, and also the various dimensions and philosophies he had. We heard from a right person. Thank you, sir, for accepting our invitation and keeping aside your political endeavors and coming here and releasing the special number on Netaji. Thank you very much, sir. It's a great honor for us to be with us. I thank the Honorable Vice Chancellor of B.R. Ambedkar University,
Agra, for accepting our invitation and for being with us and keeping aside his administrative problems, administrative things, and coming us and sparing time with us. Thank you very much, sir, for being with us. And I thank the professors who have come from different parts of India. Professor Shankar from Patna, Professor Abdul Saban from Mumbai, and Professor Sugamanand and other friends who have come here to be part of this release function. And I thank the eminent citizens of the historical city, Agra, for coming here and being part of this wonderful program. I thank the Honorary Secretary of Agra Club, Mr. S. Ghosh, for arranging this wonderful hall for us. And I thank the staff members of the Zagrapul Club. I thank the print media, electronic media, and other people who have come here to be part of this wonderful program. I thank you one and all. Thank you very much. थैंक यू प्रोफेसर करुणाकर। यहाँ पर आया हुआ एक एक शख्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं हर एक को नाम लेकर पुकारूं और आभार व्यक्त करूं, लेकिन शायद समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा। और हर किसी भी जब भी कोई मौका होता है और उसमें जब आप आमंत्रित करते हैं, स्पेशली जब एक ऐसा मौका हो जो बिल्कुल एकेडमिक्स से प्योरली जुड़ा हुआ हो और उस समय आकर पूरे समय बैठना, तो ये नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं आपका एक एक का व्यक्तिगत नाम नहीं ले पा रही, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। और लग रहा था अगर आप लोगों के पास ही, मेरे पास समय की कमी नहीं है, आप लोगों के पास कुछ और समय होता तो शायद मैं ज़रूर इस काम को अंजाम देती। और अब मैं बुला रही हूँ आगरा की सुरीली आवाज़ डॉक्टर शोभी माथुर जी को, जो यहाँ पर एकला चलो रे का गायन करेंगी। और ये जो गाना था ये नोबेल लॉरिएट रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, इसके लिरिक्स। और उसकी ख़ास बात ये है कि ये गाना उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को डेडिकेट किया था। और इसलिए इस गीत का सुमधुर गायन प्रस्तुत करने के लिए मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रही हूँ सुमधुर आवाज़ की मल्लिका डॉक्टर शोभी माथुर जी को। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়ে, আরে ও রে ও বাবা, কেউ কথা না কয়ে, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। দেরে না
যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা ওই তো রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় পাদলে আধার রাতে দুয়ার দেখো রে যদি ঝড় পাদলে আধের রাতে দুয়ার দেখো রে তবে বজিনা রলে আপন মুখের পাঞ্জর চালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत आभार डॉक्टर शोभी माथुर जी। और ये जो लिरिक्स थे गाने के वो प्रोफेसर घोष ने कल ही मैडम के पास भेजे थे और वो बंगला भाषी भी नहीं है। सचमुच संगीत किसी भाषा का मोहताज नहीं होता और संगीत विश्व की एक ऐसी भाषा है जो बिना शब्दों के हर किसी के पास पहुंचती है। इतना सुंदर उच्चारण मंगला का, मैं बहुत बहुत आभार। और मेरा निवेदन प्रोफेसर सुगाता बोस जी और कुलपति महोदय जी से कि वो हमारी तरफ से मैडम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत आभार। एक बार शोभी मैम के लिए जोरदार तालियां। और मैं अब सभी माननीय अतिथियों और इस सभागार में मौजूद छोटे बच्चों से भी अनुरोध कर रही हूँ कि कृपया लंच पर हमारा साथ दें। आप सभी सादर दोपहर के भोजन पर आमंत्रित हैं और ये जो भोज है बिल्कुल ये जो बराबर 12 आपका हॉल है वहाँ आप आमंत्रित हैं। मेरा निवेदन कोई भी बिना भोजन किए हुए नहीं जाएगा।